बहावलनगर में दरिया सतलुज में पानी की सतह में इजाफा। दरिया रावी में भारत के छोड़े गए पानी की वजह से जिला नारोवाल में सैलाब की सूरत हाल है। पीटीआई में पंजाब ने सूबे में मुमकिन सैलाब का हाई अलर्ट जारी कर दिया। India released 185,000 cusics of water into River Ravi. Several villages in Khyber district were inundated as water level in River Sutlej is rising constantly. Due to flood in Pakistan, 120 cumulative losses. 153 injured till June. Caritas Pakistan emergency response team visited flood-affected areas of Khyber on July 12, 2023 and witnessed floodwater in lands. Floodwater has damaged agriculture lands. ये लोग जो है वो अपने घरों को छोड़ रहे हैं। ये सारे मैल मवेशी और पीछे भी जो है वो लोग आ रहे हैं। पानी जो है बड़ी तेजी से जो है इलाकों में फैल रहा है। The river overflowed, causing water to enter various villages in Khyber, including Bikawind, Hankawala, Chandasing, Misteki, Kalanger, and many more. Our field team visited the affected area. Caritas Pakistan Lahore team visited River Ravi to witness the floods situation as India released water in 3 main rivers of Pakistan. यहाँ पर आप पानी का बहाव देख सकते हैं कि किस कदर तेज़ है। और ये हमारे बाबा जी हैं पिक्कीविंड गांव के बाबा पाग मसीह। इनके जानवर और इनके घर वाले आ गए हैं और हम इनके गांव में जाना चाह रहे हैं। दसोगे कि पिछले कितने के आबादी च लोग है ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਾਫੀ ਲੋग 7 ਪਿੰਡ ਨੇ 10 ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ कि पानी मजीद चढ़ता है बहुत चढ़ता। ये देख ले सर, ये पानी का बहाव बहुत तेज़ है। ठीक है, ये पानी सीधा बिखीविंड हक वाला में एंटर हो रहा है।